की है। पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे डॉल्फिन्स के खिलाफ ही, बाद में लायंस के खिलाफ 11 रन बनाए, पैंथर्स के खिलाफ 13, फिर लायंस के खिलाफ 28 पर आउट, स्टैलियंस के खिलाफ इन 39 रन की इनिंग्स खेली। आज ज़्यादा बेहतर बैटिंग रिदम में लगे और 4 रन ज़्यादा दूर नहीं थी गाजी गौरी से। अभी तक सही लाइन और पकड़ नहीं पाए हैं बास अफरीदी। साउथ अफ्रीका से आए हैं और यहाँ पे जो मौसम भी है, ओवरकास्ट कंडीशंस है, थोड़ी ठंड है, अभी उस तरीके से यूज टू हो नहीं पा रहे हैं। और लेग साइडिश लाइन और जितनी दोनों बैटर्स ये फॉर्म में हैं ये मिस आउट नहीं करेंगे। और फ़खर की खुशकिस्मती ये भी रही है कि नाफे बहुत अच्छी फॉर्म में है दूसरे एंड पे, इसलिए कभी भी किसी भी इनिंग में प्रेशर नहीं आने देते हैं, क्योंकि स्ट्रोक मेकर हैं वो भी। अच्छा कॉम्बिनेशन है, 50 रन भी मुकम्मल कर लिए सिर्फ 4.4 ओवर्स में। अच्छी तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं दोनों। या 1 रन के लिए सिर्फ 5 रन की औसत यहाँ से चाहिए मैच जीतने के लिए, तो वो तो फिक्र होनी नहीं चाहिए। लेकिन यूएमटी मार्कोर्स की टीम को यहाँ से खेलते अपनी रफ्तार पे रहना होगा। खेल की रफ्तार हम समझ सकते हैं बिल्कुल और है मुख्तलिफ है, लेकिन इनको वो जो T20 की रफ्तार है वही अपनाए रखना हो। सही सोच भी यही है यार, ये लोग खेलते भी ऐसे ही हैं। अगर इनकी आप बैटिंग लाइनअप पे देखें, फैज़ान की बात कर लें, इफ्तिखार, समद, सभी एक तरीके से एक ही गियर में खेलते हैं। मिसिंग लिंक था आज, उसने भी खाना पुर कर दिया, वो था फ़खर की फॉर्म। 5 ओवर्स में 53 बगैर किसी नुकसान। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। इन्हें देखो, फोन बेचने के लिए इतनी मेहनत। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, ऐसे दिखे या ना ही दिखे। Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए। Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. के पास टूर्नामेंट की सबसे ताकतवर काबिल बैटिंग लाइनअप है। फ़खर जमान दूर से शॉट खेलने के लिए गए, इनसाइड एज पर 4 रन मिल गए खुशनसीबी के। जब आपकी फेवर में चीजें जा रही हो तो सब कुछ ही आपकी फेवर में जाता है। इवन इनसाइड एजेस भी आपकी फेवर में जा रहे हैं, दूर से खेल गए। जब आप अच्छी हिटें लग रही हो तो इंसान शायद कभी कभी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है कि ये भी लग जाएगी, लेकिन ये थोड़ा दूर थी लेंथ और लाइन भी। फ़खर जमान को तकरीबन ले आए थे अपने नाम में, यहाँ पर पुल शॉट खेल गए हैं 4 रन के लिए। स्कोर के पीछे थे बाउंड्री फील्डर, लेकिन फ़खर जमान का शॉट खासा ताकतवर था। तेज बॉलर हैं एहसानुल्लाह, इसलिए ये रुकने में नहीं आई। यहाँ थोड़ा पेस का भी इस्तेमाल किया और बल्ले का स्विंग भी बहुत कमाल का था, प्लेसमेंट भी अच्छी रही। अच्छी पेस से बॉल कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में एहसान, इसलिए जानते हैं फ़खर के पेस का इस्तेमाल करेंगे, प्लेस करेंगे तो बाउंड्रीज ज़रूर हासिल करेंगे। डीप थर्ड को आगे लाया गया है, लॉन्ग ऑफ पीछे, और फ़खर जमान ने इसे बैकफुट पर जाकर स्मैश कर दिया, वहीं से जहां फील्डर आगे बुलाया गया था। 4 रन और मिल के रहे। फ़खर जमान को रोकना इस वक्त नामुमकिन हो रहा है। इस बार थोड़ा इंतज़ार किया, लाइन आप भले थोड़ा दूर थी लेकिन इंतज़ार किया। ये अच्छी समझदार बैटिंग है, जब आपकी लग रही हो तो आपको उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, और वही फ़खर कर रहे हैं। शानदार हिटर है, कितने अच्छे लगते हैं हिट मारते हुए, कंट्रोल में लगते हैं, नेचुरल लगते हैं। थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या चौका है या छक्का। सही मशरफ तो बहुत ही परेशान रहे इस टूर्नामेंट में, चेंजेस भी करके देख ली, बॉलिंग में बैटिंग में सब में चेंजेस करके देख ली, लेकिन काम कुछ नहीं आया। ये तो बहुत ही
आसान डिसीजन होना चाहिए था ऑन फील्ड अंपायर के लिए तारिक भाई। यहाँ शायद आज मैदान में बादल हैं, धुंध के आसार हैं, अंपायर ना देख सके हूँ। पुल शॉट, यहाँ पर फिर रन आएंगे 4। एहसानुल्लाह ने पहली गेंद आगे की थी, दूर की थी और तकरीबन कारगर हो चले थे। उसके बाद से उनने पटाखना शुरू कर दिया है और आप फखर जमान के हाथों में खेल रहे हैं। नहीं, आप तो जैसे चाहे जहां चाहे फखर जमान चौके पर लगा रहे हैं, लेंथ से नहीं चूक रहे हैं। आपको यहाँ पे वेरिएशन भी दिखानी होगी। अगर आप एक ही लेंथ पे बॉल करते रहेंगे थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा इनटू द पेस स्लोअर वन का इस्तेमाल यूजुअली करते नहीं है एहसानुल्लाह, सिर्फ पेस पे ही इंतजार कर रहे हैं। ये लन डिलीवरी थी, बेहतर गेंद थी। फखर जमान जो हैं इनका अगला पाँव नहीं जाता है गेंद की लाइन की जानिब, तो इसलिए ये बुरा ख्याल नहीं था। इस ओवर को अच्छा शुरू किया था, उसके बाद से अचानक इनको तेज बॉलिंग करने की सूझी फखर जमान के सामने और उसका नतीजा बुरा रहा है। नाफे के लिए एक गेंद है इस ओवर में और बैकफुट पर जाकर खेल दिया शानदार तरीके से। ये 6 रन्स, इसे अपर कट किया। नाफे ने पूरी तरह कंट्रोल में थे। लाजवाब दीदा से 6 के बाद 76 स्कोर। यहाँ लाजवाब बैटिंग है ये, दोनों हार्ड हिटर बैटर्स की जानिब से। दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे पे प्रेशर भी नहीं आने देते हैं। दोनों स्ट्रोक मेकर हैं। 6 ओवर्स का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। 76 रन्स बनाए जो कि सबसे ज़्यादा रन्स हैं इस टूर्नामेंट में पावर प्ले में। 76 रन्स डोमिनेट किया है उन्होंने। 23 रन्स आए आखिरी ओवर में एहसानुल्लाह के। क्या शानदार तरीके से पावर प्ले का इख्तिताम किया। सबसे अच्छी बात यह रही कि फखर जमान ने 45 रन्स बना लिए हैं। अच्छे लग रहे हैं सिर्फ 24 बॉलों पर। 7 निभा रहे हैं नाफे, 12 बॉलों पे 24। बहुत ही खतरनाक साइड है ये। और देखिए कैसे निखार आया है नाफे की बैटिंग में पूरे टूर्नामेंट में अगर बात करें। और यही फ़ायदा है इस चैंपियंस कप का भी कि जब आप बैटिंग करेंगे फ़खर के साथ तो आप भी सीखेंगे साथ दूसरे एंड पे। आसिम अकरम आ गए, 31 विकेट्स हासिल किए उन्होंने इस लेवल पे। अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ कर पाएंगे, क्या कुछ अलग कर पाएंगे। तो फ़खर उस जोन में है, उस मूड में है जहाँ पे उनको रोकना बहुत मुश्किल है। आप चौके एक छक्का लगा चुके हैं। जब आप किसी अच्छी टीम में खेलते हैं तो उसमें आपको इतना फ़ायदा हो जाता है कि सरनाफे जो हैं शुरू में 1-2 मैचेस में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, फिर एक बुरा दौर इन पर आया, ज़्यादा रन्स इनके बल्ले से नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि बड़ी टीम में खेल रहे थे इसलिए बहुत से खिलाड़ी इनके इर्द गिर्द इतने सीनियर थे। इफ्तिखार अहमद थे, इसके अलावा मोहम्मद नवाज से पिछला मैच अब्दुल समद ने जितवाया तो किया था आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर, कि वो आपका बोझ जो है वो उठा लेते हैं, आपको कंधों पर लेकर वो चले रहते हैं। तो इससे फिर आपको भी संभलने का मौका मिल जाता है। अच्छी टीमों में नए उभरते हुए बासलाहियत खिलाड़ी होते हैं, उनके पनपने का वो जो शरह है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका इम्कान। यहाँ 100% आपने दुरुस्त कहा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मिसबाह उल हक हैं जो कि मेंटोर हैं इस टीम के, और वो ज़्यादा चेंजेस करते भी नहीं है टीम में। इस पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक चेंज की गई है, खजान को सिर्फ लाया गया है इस टीम में। इसलिए जब आप एक टीम को सेटल होने देते हैं कॉन्फिडेंस भी आता है यंगस्टर को। मुझे बैक किया जा रहा है मैनेजमेंट की जानिब से, मैं अपने शॉट्स खेल सकता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, दिल खोल के बैटिंग कर सकता हूँ। दो चेंजेस फैजान आए और बिलावल भट्टी, ज़्यादातर इसके अलावा चेंजेस की नहीं है। ये देखिए, और फिर खेलते हैं वो ऐसे शॉट्स।
अपने मेंटोर को तो खुश कर दिया होगा इस सेट से। क्या तगड़ा शॉट है ये। जहां स्पिनर पर मिसबाह उल हक भी ऐसे हमलावर होते थे। फ्लाइटेड गेंद खासी बाहर थी ऑफ स्टंप के, विकेट खरीदना चाहते थे लेकिन बार किया, टूट पड़े इस पर ख्वाजा मोहम्मद नाफे। दूसरा छक्का उन्होंने लगाया, फखर जमान ने एक ही छक्का लगाया, लेकिन उनके 8 चौके बाउंड्रीज में 8-1 की निस्बत है फखर की। नाफे ने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। गेंद को धकेला 1 रन के लिए। एक और बेहतरीन ओवर, ये भी डबल फिगर में गया छक्के की मदद से। 7 के बाद 86 पर कोई नहीं। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। से नाफे और फखर का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही लाजवाब है। फखर ने थोड़े रस्टी थे लेकिन इस इनिंग में अपनी फॉर्म बहाल की है और उसके बाद अपने स्ट्रोक्स दिखाए, भरपूर तरीके से एंजॉय किया इस बैटिंग को, तगड़े शॉट्स खेले हैं और यही हम फखर से एक्सपेक्ट भी करते हैं। एहसानुल्लाह की पेस को इस्तेमाल किया है, 4 चौके लगातार लगाए, ग्राउंड की दोनों जानिब तगड़े हिट्स लगाए और उसके देखा देखी नाफे ने भी अपना टैलेंट और अपना जौहर दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप इस प्लेयर के जानिब से। इमाम उल हक और हसन नवाज वो भी मिलकर अच्छा खेलते रहे दोनों, लेकिन आज जब ये दोनों सही मानों में आ मिले हैं, T20 टूर्नामेंट का जो रंग है वो मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। महसूस हुए शायकीन यहाँ पर आकर मौसम आज ऐसा सर्द मेहरी बार है, घास जो है वो इन दिनों जल जाती है पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में। अलबत्ता ख्वाजा नाफे जो हैं ये असली हालत में आपको नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं ऑफ साइड में इन शॉर्ट गेंदों को। एक बार फिर उनका प्लेसमेंट असली और खालिस ख्वाजा नाफे बेहतरीन शुमार करते हैं। बैटिंग की जो शॉट सिलेक्शन है ये बहुत ज़बरदस्त है और दिलेर तो है ही, इसलिए बहुत ही अच्छा लगता है इनको बैटिंग करते हुए देख के, क्योंकि घबराते नहीं है सिचुएशन से, आपको एक्सप्रेस करने से नहीं घबराते हैं, पॉजिटिव इंटेंट रहती है हमेशा से। ऑन साइड में खेला, एक बार फिर स्टाइलिश लगे ख्वाजा मोहम्मद नाफे। दूसरी जानिब जो अब्बास आफरीदी हैं ये कभी-कभार उनकी बॉलिंग देखकर ऐसा लगता है कि ये लो स्कोरिंग 150, 140 उस तरह के स्कोर को डिफेंड करने वाले बॉलर नहीं लगते। ये ज़्यादा जब 200 से ज़्यादा रन्स बने हुए हों तो उन हालात में ये ज़्यादा कारगर रहते हैं, क्योंकि पेनिट्रेट करके विकेट लेना वो इनका खासा अभी नहीं लगा। ज़्यादातर विकेट जो है खरीदते हैं। लेकिन तारिक भाई एक बात तो माननी होगी कि इन्होंने अपनी जगह तो बहुत अच्छे तरीके से पक्की की है पाकिस्तान साइड में, क्योंकि इनके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है जो कि T20 की रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपने दुरुस्त कहा कि जब भी बैटर्स इनको बड़ी हिट मारने जाते हैं तो ये विकेट खरीदते हैं। डेथ के बहुत शानदार बॉलर हैं, एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, उनके लिए अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, लेकिन उस तरीके के अगर आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि बहुत तेज़ बॉलिंग करेंगे 140-45 की पेस पे, वो शायद इनकी स्ट्रेंथ नहीं है। इनकी स्ट्रेंथ वेरिएशन है। यहाँ किसी हद तक इनकी रफ्तार जो है वो बढ़ी है, इसमें कोई शुबा नहीं। बॉलिंग की रफ्तार है बढ़ी है, वेरिएशंस पहले इनके पास कमी नहीं थी, लंबे करते हैं। ज़ाहिर है अभी अपने करियर के जिस मरहले पर हैं सीखने के दिन हैं, आज और ज़्यादा सीख कर जाएंगे। फखर जमान जैसे खिलाड़ी को बॉलिंग करके और 2 सेट बल्लेबाज जिनका बल्ला जो है सो आग उगल रहा। ये बात तो आपने दुरुस्त की है,
कि अगर आप फखर को बॉलिंग करते हैं और वो जिस मूड में है तो वो तो नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए एक और वेरिएशन बैक ऑफ द हैंड बॉल किया इन्होंने। इसी वेरिएशन की वजह से इन्होंने बहुत जल्दी अपना नाम बनाया और पाकिस्तान टीम में अपनी जगह मुस्तकिल की है। 8 ओवर्स के बाद 93 रन बगैर किसी नुकसान के, इनफैक्ट 94 रन बगैर किसी नुकसान के। .94 for none. What a start this has been. Good to see Fakhar Zaman back amongst the runs, and he gets to his half century. That's his first 50 of the tournament, but it has come in double quick time, like is always the case with this man. Fakhar Zaman will take a bow. Well played. Blazing innings this from Fakhar. He came in and he dominated, along with his partner also playing well. 50 of 29 for Fakhar. And yes, it's a great start, but it has almost ended the game. Both of these batters looking in absolute control and authority. Great strokes all around. This is, I think, the best opening partnership of the tournament so far. Probably one of the best. Imam and Hassan Nawaz is an opening pair, has done really well. Now these two on the brink of getting 3 figures. Nafe didn't quite know where that ball went. Bit of variation. It's really gone foggy in the last 15 minutes or so. You're right, Salman. Partnership has virtually ended this game as a contest. Where Fakhar unleashed the assault. Not enough. He also played his part. This is not quite over so far. It's a rarity in this innings. Of course, by Qasim Akram. Change of angle from Qasim Akram. Round the wicket. Goes big, goes massive. That is a wonderful strike from a wonderful young batter. 100 has been brought up. 9 overs done. UMT Marcos 101 for 9. सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। Town Properties. Barrier Town goes global, developing a world-class gated community in Dubai South. This campaign has really gone south for Angro Dolphins, still in search of their first victory, and by the looks of things it's not going to come at least today. They will have 2 more chances. Shayan Sheikh, 3 wickets in this format. Given the ball, Fakhar now after the helter start looks like he's easing into the innings. Very happy looking bench. Faizan reaching to get in, get another opportunity. Ajanafe looked good against pace and spin. With the openers now hitting one of the
best partnership that it has been. Nafe also nearing his 50, is on 45. As Fakhr creates room and looks to play a big stroke, but Shayan is following him, not allowing him to free his arms. This one, short single for Fakhr, who is happy to just rotate now and give Nafe a chance to get to a 50. 37 more required. 62 balls remain. Should be walk in the park from here. Indeed. And if you look around the field, you look at the body language of Angro Dolphins fielders. Side edge onto the pad. No one in close proximity. Yeah, Salman, if you look around, you see plenty of dejected bodies. And this is Qasim Akram, Sabzada Farhan. It tells you a lot, the body language. The halfway stage, UMT Mar Force in complete control. 105 for none and time for drinks. More passion, more energy. स्टक हो रहा है. फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. जमकर खेलने का, क्योंकि वो देता है। जमकर खेलने का, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के एन मुताबिक 13 दिसंबर से 19 दिसंबर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मुनक्किद करवा रहा है पाकिस्तान में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट कायद-ए-आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स, जहां खेलेंगे नौजवान और जीतेगा पाकिस्तान। मगर ये खेल नहीं आसान। Stopping him. Yes, had you said no stopping, and there wasn't anything gonna stop these two. They look like they're gonna win this by 10 wickets. They're batting solidly, not missing out on anything loose. In fact, creating shots of good deliveries. This is how good this pair has been. 105 for no loss as the innings is at the halfway stage. And this is a sorry sight. No wickets for anyone, but high economies for most of them.
But first with the partnerships as well, and Indian Pindi as Nafe pushes it quietly. Fahim Ashraf, skipper, make some breakthroughs. Yeah, but talking about opening partnerships, the record opening partnership also occurred here at the Pindi Cricket Stadium. Salman will know a thing or two about that. Watched a lot of belligerent batting from Kamran Akmal that day from the non-striker end. Nice summary of that game. Nicely timed. It's quick and away from Shayan, and that's 50 for Khaja Nafe. Beautifully timed. He's got power, he's got touch. Watch out for this boy. Well played, Khaja Nafe. Delayed the shot, made sure that the ball went in the gap and played right under his eyes. Just have a look at this. Just timing, nothing else at all. Just making sure the ball went in the desired direction. And the pace was used to perfection by Nafe. Wonderful knock by this young man. He's growing in confidence and stature. As this is being pulled, this time straight to long on. That you've just mentioned, myself and Kamran, was a wonderful day and the best seat in the house to watch a great knock from a tremendous player such as Kamran Akmal. 71 deliveries for his 150, and this is just a little bit of sporting act. That is the main hero of the game, Kamran Akmal. 150 of 71, he's smashed everyone left, right and centre in that game. One of the cleanest striking innings that I have watched in my entire career. Again, in that summary, two of the bowlers that showed up was Raza Hassan and Umar Gul. Both of them very, very good bowlers. Umar Gul obviously world class in this format. Raza Hassan not too shabby either. Mohammad Irfan, the tall guy, that time he was quick as well. And on that particular day, there was no hiding. And if somebody thought that it was a great batting track, just look at the second innings, 100 to 10. That happened to be the largest T20 partnership in Pakistan as well. Part of that history. Any particular standout moments in that partnership? I will put you on the spot, Salman. It was just clean striking and good cricket shots. If you have a look at those boundaries that go ahead, were pure cricketing strokes. There was no ramp, there was no reverse sweeping, but great control, great authority and great power on display. Imran was the finest Pakistan's ever got, especially in the format. In the innings, he was very good player, very good off the back foot, always was good against the short ball, the cut and pull, his favourite strikes. Remember. Khaja Nafe and Zaman did not go that far because they're not chasing that many. They have lit up Pindi Cricket Stadium with their stroke play. Ball striking has been amazing. 11 gone, 1-1-2 for none. सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं, इट वर्क्स. Is that they hadn't gone for everything.
chose which deliveries they want to go for big hits and picked up singles in between. Even rotation of strike, 33, 34 deliveries. That's also a good feature of this partnership. It's big. Is it big enough? Not quite. Taken by Waqar. And Shayan has dismissed Fakhr Zaman. Didn't come on as much as Fakhr was anticipating. Probably hit towards the bottom part of the bat. Nicely judged by Waqar. Leap towards the end to get both hands. Fakhr Zaman gone for 53. And UMT Marcos 113 for 1. Mohammad Faizan, tall right-hander. A lot of pressure in terms of achieving the victory target, but just a while ago when we saw the points tables, Faizan has gone big right from the start, but he's been taken once again in the deep. Very well judged by Salman. Probably looking to improve that run rate that they're fighting to get the better of Allied Bank Stallions, and he's perished in the cause. Have no idea of what Faizan was thinking about while going for that stroke. It is the first delivery that he is facing, and he's trying to force the issue, that too against the spin, with the fielder waiting on the ropes. I find things like these hard to comprehend as UMT Marcos lose their second wicket. It's 113 for 2. So they inform Iftikhar is in, as he is just closing his gloves. Probably had to put a thing or two on quickly, because obviously he wouldn't be expecting Faizan to do the kind of thing that he did. A stroke which has no technical description. Probably only thing to do with it is the thought process. On a hat-trick, Shayan got a slip in place. Easy as you like. Pushes it down the ground. And you're talking about Faizan's dismissal. Times when you see a partnership like the one between Fakhr and Nafi. How Fakhr got out. You walk in as Faizan, you think it's easy as it looks, but it's not. Yeah, the first one, poor delivery to get a wicket, then a poor stroke. Certainly, this figures look $1 million. But if you see the shots, you say, what's going on? Faizan, no screens. What is going through his mind at the moment? Shayan wouldn't complain. Got to finish off. Over number 12, 115 for 2 UMT Marcos.
2 विकेट शायान शेख ने हासिल किया अपने ओवर में, लेकिन ये जो मैच है अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है। और आज अच्छी कोशिश यूएमटी मार्कोर्स ने की अपने रन रेट को बेहतर करने की, विकेटों को बिल्कुल परवाह नहीं की। नाफे चमन पर हैं, इफ्तिखार भी यही कोशिश करेंगे कि जल्दी इस मैच को किया जाए। एहसानुल्लाह के सामने एक मौका भी होगा जो आज दबाव में लगे। जल्दी मैच खत्म करने की कोशिश। आगे गेंद गिरी, ख्वाजा नाफे ने सिर्फ मिड विकेट के फील्डर जो दायरे में थे सिर्फ इनको पार करना था और अच्छा निपटा उन्होंने आसानी के साथ इसे पिक कर दिया। 4 और रन के लिए इनका छठा चौका। पर कट किया, लेट कट किया 1 रन के लिए। वहाँ पर शायान फील्डर एहसानुल्लाह पहले मैच में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, 2 ओवर्स किए थे और आज जो हैं ये थोड़ा सा जज्बात की राह में बह गए। ज़्यादा रफ्तार यहाँ पर दिखाना चाहते थे फ़खर के सामने, लेकिन उनको चैलेंज करना लगता ये कि अभी तक ये तैयार नहीं थे शायद फिजिकली पूरा। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इनको भी ये एहसास करना होगा जब सिर्फ तेज़ बॉलिंग करने से इस फॉर्मेट में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक आपके पास थोड़ी वेरिएशन नहीं होगी। देखिए अपर कट कर दिया है, एक बार फिर तेज़ ही बॉल कर रहे हैं। आपको थोड़ा मिक्सअप करना होगा और अगर आप इस स्पेस के साथ आपके पास वेरिएशन आ जाए तो फिर आप बहुत ख़तरनाक बॉलर बन सकते हैं। लेकिन शायद अभी वो उनका जो फोकस है वो रिदम हासिल करने में है, यही कोशिश कर रहे हैं कि तेज़ से तेज़ बॉलिंग की जाए। लेकिन जल्दी एहसास करना होगा, जज्बात तो ज़रूर अच्छे हैं, ज़रूरी होने चाहिए फास्ट बॉलर में, लेकिन थोड़ा जहन भी लगाना है साथ साथ इस फॉर्मेट में स्पेशली। फहीम अशरफ ने खुद आज 2 ओवर किए, 17 रन दिए। हुक शॉट खेला, गेंद पहले गिरी लॉन्ग लेग से, अफरीदी को आना पड़ा, लेट हो गए थे नाफे। इस बार तेज रफ्तार गेंद थी एहसानुल्लाह की। यहाँ एक ही बॉल पे इन्हिसार किया उन्होंने, लेंथ बॉलिंग और तेज बॉलिंग एहसानुल्लाह की जानिब से। जैसा भी आपने कहा कि जब फ़खर को आप इस तरह से एक ही तरह बॉलिंग नहीं कर सकते, और अब तो जितने यंग बैटर्स आए हैं किसी को भी एक ही तरीके से बॉल करते जाएंगे तो वो आपको मारते चले जाएंगे। ख्वाजा नाफे की भी मिसाल आपके सामने है। बुरी गेंद थी और बुरा नतीजा भी, बहुत बाहर थी लेग स्टंप के और बआसानी इसे ग्लैंस कर दिया इफ्तिखार ने। चौके के साथ ओवर का भी इख्तिताम हुआ, 11 रन आए 13 ओवर्स के बाद 126 पे 2। रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसरी रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। ये नारंगी लकीर जो आप देख रहे हैं ये शुरू से ही खासी ऊपर रही है और उस पर वो जो 2 नुक्ते आपको नजर आए थे वो लगने तक बहुत देर हो गई थी। 113 पर वो दोनों विकेटें गिरी थी, लेकिन उस वक्त तक नील लकीर का इसके करीब आना वो बहुत मुहाल हो गया था। इफ्तिखार अहमद लेफ्ट आर्म स्पिनर
तो ये अच्छा खेलते हैं लेग स्पिनर की निस्बत। इन्होंने अपनी बैटिंग वो बहाल कर ली है। इफ्तिखार अहमद ने अपनी बैटिंग की जो फॉर्म थी, पिछला मैच अब्दुल समद ने छक्का लगाकर जितवाया। नवाज अहमद जो हैं, मोहम्मद नवाज, वो भी रन्स में हैं। सरवर अफरीदी, साद मसूद, ये पहले ही अपनी टीम को एक एक फुतवाहत दिलवा चुके हैं। तकरीबन सारी टीम फॉर्म में है। और इन्होंने सरफराज अहमद की टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नजर नहीं आया फॉर्म में हो। स्लोअर वन किया इस बार, हवा में स्लो छोड़ा शिजान ने, अच्छी बॉल की है। जहाँ पे सबको मार पड़ रही है इन्होंने आके थोड़ा संभाला है। एक सेटल्ड कैंप है इस बार मेंटरशिप में। मैच विनर्स हैं इनके पास, एक के बाद एक मैच विनर है। सभी आपने कहा कि सभी एक ना एक मैच जितवा चुके हैं। और अब जो जंग है वो पहली स्पॉट की है राइट बैंक स्टैलियंस के साथ। देखना होगा कि कौन पहली पोजीशन पे फिनिश करता है, क्योंकि जो पहली नंबर पे फिनिश करेगा वो सीधा फाइनल में जाएगा। दूसरी और तीसरी पोजीशन वाले को एक सेमीफाइनल सॉर्ट ऑफ खेलना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बेहतर जो मुझे यूएमटी मार्क की कामयाबी में नजर आए, ये बहुत बड़ा शॉट, बहुत ही बड़ा, बहुत देर हवा में रहने के बाद ये बाहर चला गया 6 रन के लिए। अब सर इफ्तिखार भी पीछे नहीं है। शानदार शॉट, शानदार शॉट के साथ ओवर का भी हुआ मुकम्मल। 135 पे 2। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। More passion, more energy. फोन स्टक हो रहा है। हाँ, फिर से फंस गया। Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. ये पुल शॉट और 5 में से 4 रन बन गए। दोनों टीमों का स्कोर बराबर हो गया। नाफे ये पलक झपकते ही ये पहुंच गए अब 66 पर। नाकाबिल शिकस्त यहाँ से अगर जाते हैं, विनिंग शॉट खेल कर जाते हैं, तो उसका जो लुत्फ है वो और ही रहेगा। उसको ये भुला नहीं सकेंगे। और फिर आप इत्मीनान के एक मुख्तलिफ दर्जे पर आ जाते हैं जब आप शुरू में आए और विनिंग शॉट खेल कर जाएं अपने बल्ले से। टीम में भी रिस्पेक्ट बढ़ती है कि आप फिनिशर हैं, आप मैच खत्म करके आए हैं। और ये वाइड, उसकी नौबत नहीं आई। यूएमटी मार्कोर ने मैदान मार लिया है। उनने 8 विकेटों से यहाँ पर शिकस्त दे दी है डॉल्फिन्स को। और इस तरह जो डॉल्फिन्स की नाकामियाँ थी वो सिलसिला नहीं थम सका। आज इफ्तिखार अहमद ने टॉस जीता और पहले बैटिंग। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। सेंसराइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसराइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। इफ्तिखार और टीम ने बहुत ही अथॉरिटेटिव, बहुत ही खुश होगा ये कैंप, बहुत तसल्ली में होगा क्योंकि टीम में बहुत सारे मैच विनर्स हैं और एक जो कमी रहती थी वो फखर जमान की फॉर्म थी वो भी इस मैच में पूरी हो गई और काफी सैटिस्फाइड। बहुत कुछ सोचना होगा एंग्लो डॉल्फिन्स को।
फखर जमान ने धुआंधार मिस सेंचुरी बनाई। आज उनने 8 चौके लगाए, एक छक्का भी। नाफे के साथ उनकी एक 13 रन की पार्टनरशिप थी। ख्वाजा नाफे आखिर तक डट कर खेलते रहे, 66 रन बनाकर तो नाकाबिल शिकस्त रहे। फैजान बगैर रन बनाए गए, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने आकर काम पूरा किया। नहीं, यहाँ तो बहुत मुश्किलात हैं एंग्लो डॉल्फिन्स के बॉलिंग यूनिट में। ज़मीन गुल बगैर कोई विकेट लिए 18 रन दिए। सिर्फ शायान ऐसे बॉलर है जिन्होंने 2 विकेट्स हासिल की, अच्छी बॉलिंग की 16 रन देकर। उसके अलावा कोई विकेट बॉलर हासिल नहीं कर सका। अब्बास अफरीदी को इस मैच में लेके आए थे, 2 ओवर्स में 25 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की, और 14 ओवर्स में ही 140 रन करवा दिए। ये सेशन क्या ये बड़ा उम्दा शॉट ऑफ साइड में, लेग साइड में, बैक फुट पर बहुत ही मजबूत लगे। नई गेंद की भी परवाह नहीं की। फखर जमान भी बाउंड्रीज में वो जल्दी आ गए थे, और एहसानुल्लाह जब आए तो फखर जमान ने उनकी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग पर पिटाई शुरू कर दी। ये छक्का लगाया था पॉइंट पर ख्वाजा नाफे ने। कासिम अकरम को ख्वाजा नाफे ने ये मैच का सबसे बड़ा छक्का लगाया। बिल्कुल फ्लैट बल्ले के साथ खेलते हुए नजर आए। फखर जमान आउट हुए बाउंड्री लाइन पर। अच्छा कैच लिया वकार ने शायान की गेंद पर। उसी ओवर में शायान के एक विकेट और हाथ लगी। आउट हुए फैजान, पिछले मैच की बैटिंग हीरोज में से थे, लेकिन आज 0 पर आउट हुए। और बाद में जो बाकी मादा रन की रस्म थी वो निभाई। इफ्तिखार अहमद और ख्वाजा नाफे ने एक छक्का लगाया। ख्वाजा नाफे ने एक दिलकश पुल शॉट था। तो यहीं पर बात जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन बिल्कुल यकतरफा। ये तो लाइव मैच भी झलकियों की तरह ही रहा है। सेकेंड इनिंग की अगर बात करें, जिस तरीके से बैटिंग की है फखर जमान और ख्वाजा नाफे ने, बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन हिटिंग हमें देखने को मिली। और ऐसे ये मैच निपटा। एंग्लो डॉल्फिन्स को पहले बैटिंग करने के लिए कहा था यूएमटी मार्कोर्स ने, सिर्फ 139 रन ही बना सके अपने 20 ओवर्स में। वकार ने अपने डेब्यू पे 55 रन बनाए। कासिम अकरम ने 31 रन बनाए। निसार ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस को जारी रखा, 4 विकेट्स हासिल की 22 रन देकर। आकिफ ने भी 2 विकेट्स हासिल किए। और जवाब में यूएमटी मार्कोर्स ने बहुत ही आसानी से सिर्फ 14.1 ओवर्स में ही अपने 140 रन बना लिए, 2 विकेट्स गंवाकर। ख्वाजा नाफे नॉट आउट रहे 66 रन बनाकर। फखर जमान ने फॉर्म वापस हासिल की, 53 रन बनाए 34 बॉलों पे। और यूएमटी मार्कोर्स ने बआसानी ये हदफ पूरा किया और मैच 8 विकेटों से जीत लिया। मुबारक के हकदार हैं यूएमटी मार्कोर्स, जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। और इस परफॉर्मेंस के बाद ये चले गए हैं टेबल पे सबसे ऊपर। पहले भी उधर ही थे, लेकिन और मजीद अपने आप को मुस्तहकम कर लिया है। इस नेट रन रेट को भी 6 में से 5 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 10 पॉइंट्स। अलाइड बैंक स्टैलियंस 6 में से 4 जीते हैं और 8 पॉइंट्स पे हैं। नूरपुर लायंस 6 में से 3 जीते, 3 हारे, 6 पॉइंट्स। लेक सिटी पैंथर्स भी 6 में से 3 जीते, 3 हारे और 6 पॉइंट्स। एंग्लो डॉल्फिन्स को एक और शिकस्त का सामना हुआ, 6 मैचेस में से 6 ही हार गए और कोई पॉइंट इस टूर्नामेंट में हासिल नहीं कर सके। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त है एक ब्रेक का। जब हम वापस आएंगे तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के साथ हाजिर होंगे।
जम कर खेलने का, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के एन मुताबिक 13 दिसंबर से 19 दिसंबर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मुनक्किद करवा रहा है पाकिस्तान में खेलों का सबसे बड़ा इवेंट कायद आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स, जहां खेलेंगे नौजवान और जीतेगा पाकिस्तान। मगर ये खेल नहीं आसान। Yet another dominant display from UMT Marcos has seen them go to the top of the table. And Dolphins, another loss to their credit, still searching for their first win in the tournament. Welcome along to the post-match presentation ceremony. To do the honors, I've got in the presentation party Mr. Khushbakht Khan. He's the GM Administration Customer Support Center, Barrier Town. Thank you very much for your time, sir. Start off with the man of the match. And the player of the match for today, with his splendid spell of fast bowling, 4 for 22. Our player of the match is Nisar. Nisar Ahmed will collect a check of 25,000 rupees and a trophy from Mr. Khushbakht Khan. Another man of the match for Nisar. This is his second of the tournament. सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, दूसरा मैन ऑफ द मैच है इस टूर्नामेंट का, अच्छी फॉर्म आपकी जा रही है बॉल्स के साथ। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अच्छा किया टीम के लिए और हम मैच जीते हैं और मैं मैन ऑफ द मैच हूँ। बताइए अपने बारे में ज़रा, आपकी जो स्किल्स में जो पुख्तगी है, कंसिस्टेंसी है, काफ़ी आपने ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी स्टेज पर जो आप प्रोमिनेंस आपको मिल रही है, इसको कैसा देखें? इसमें मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपनी स्किल्स को जो है ना वो बैक करूँ, अपनी स्ट्रेंथ पे रहता हूँ और लेंथ बॉल हिट करता हूँ, कंडीशंस को असेस करके उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग करने की कोशिश करता हूँ और जो टीम का प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग बॉलिंग करता हूँ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिलती है। और ये जो आपने बात की कंडीशंस को असेस करने से, ये तजर्बे से आती है, कुछ बताइए अपने क्लब क्रिकेट के बारे में, कहाँ से आपने ये तजर्बा हासिल किया? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो भी है कंडीशंस को एसेस करना जो है वो आपके एक्सपीरियंस से आता है, खेल खेल के आता है। तो काफ़ी देर से खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2016 से ग्रेड 2, उसके बाद फर्स्ट क्लास फोरडे क्रिकेट काफ़ी खेली है जिसकी वजह से काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। T20 मैच में हर फेज़ जो है वो बॉलर के लिए टफ होता है, नई बॉल से पावर प्ले होता है, मिडल ओवर्स में आते हैं, डेथ ओवर्स में आते हैं, तो कैसे अपने स्पेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या थॉट प्रोसेस होता है डिफरेंट स्टेजेस पे? ये मेरी कोशिश यही होती है कि जो स्टार्ट है वो अपनी स्ट्रेंथ से करूं, उसके बाद अगर कुछ नहीं हो रहा, स्ट्रेंथ से मुझे हेल्प नहीं मिल रही, तो फिर मैं वेरिएशंस की तरफ जाता हूं या फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करता हूं, तो जिसमें सक्सेस मिलती है। चलिए निसार, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आप, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। निसार अहमद, द प्लेयर ऑफ द मैच, एंड विल हैव अ फ्यू वर्ड्स नाउ विद द लूजिंग कैप्टन फहीम अशरफ। राना साहब, अच्छा लगा आपको मुस्कुराते देखकर, लेकिन आपकी टीम जो है टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रही है, आज फिर प्लान में कहाँ पे गलती हुई? देखें जी, जो एक टीम का प्लान होता है ना, उसमें जब आप 100% नहीं ना देते तो आपकी टीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं जाती। तो मुझे यही लगता है कि जो प्लान कर रहे हैं और टीम जो एफर्ट है ना वो 100% नहीं है और काफ़ी मुश्किल होता है, ज़ाहिर है हर मैच के बाद इस तरह आके बात करना, मुझे पता है कि एज ए कैप्टन आपके लिए काफ़ी मुश्किल है,
लेकिन काफ़ी आप सीख रहे हैं, एज ए कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती है इस तरह के तजर्बे से। हाँ जी बिल्कुल, मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसे है कि 6 के 6 मैच में हार चुका हूँ, 5 के 5 या 6 के 6। इससे ये है, सब्र तो क्रिकेटर में पहले होता ही होता है, लेकिन इससे ये है कि काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है कि टीम को कैसे लेकर चलना है। बाकी जितने लड़के हैं सबको, जिससे परफॉर्म नहीं भी हो रहा, जिनसे हो रहा है, सबको कैसे लेके चलना है, क्योंकि जब परफॉर्म हो रहा हो, आप जीत रहे हो तो सारी चीज़ें आपके हक में जाती है। जब चीज़ें आपके हक में नहीं ना, तब आपको टीम को जो लेके चलना पड़ता है, तब आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। और ऐसा कुछ आपके जहन में आया कि जिस तरह बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, आप अच्छे लगें जब भी आप बैटिंग करने गए, तो ख़ुद को प्रमोट करें, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ऊपर के नंबरों पे खेलें? जी बिल्कुल, कोशिश तो है कि पहले जो हमारे मेन बैट्समैन हैं उनको, लेकिन आज देखें, आज हमने थोड़ी सी चेंजिंग भी की है, मैंने अपनी बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग किया। कोशिश यही है कि जितने हमारे मैक्सिमम बैट्समैन खेल सकें, उनके साथ साथ मैं जितना उनके साथ पुट इन कर सकता हूँ अपनी टीम के लिए, वो करूँ। चलें, टफ लक आज के लिए और कोशिश करते रहिए, अभी 2 मैचेस बाकी हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फहीम अशरफ, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड नाउ आई विल कॉल अपॉन इफ्तिखार अहमद, द विनिंग स्किपर। मुबारक हो इफ्तिखार, एक और मैच आप जीते और फाइनल की तरफ जो टॉप पोजीशन की लड़ाई है उस वक्त इसमें आप जो है वो सबसे बेहतर पोजीशन पे नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जो हमारी मीटिंग भी होती है तो हमेशा हम यही बात करते हैं कि अपने पोल को हमने टॉप करना है, चाहे फिर उसको फिर बाद में फ़ाइनल में देखी जाएगी या जो भी है, हर मैच में हमने एफ़र्ट दिखानी है, तो बस एफ़र्ट करके इंशाल्लाह टॉप के लिए क्वालिफाई करें। और आज आपने टारगेट बहुत जल्दी अबूर कर दिया, तो उससे रन रेट पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, लाजमी बात है। इसको क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल में बॉलर्स को, जिस तरह उन लोगों ने बॉलिंग की है, लाइन और लेंथ पे मतलब बॉल को मारा है, तो ऐसे विकेटों पे अगर आप लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करते। और अच्छा लगा होगा कि अब टूर्नामेंट का जो मेन एंड शुरू हो रहा है, फ़खर आगे उन्होंने जिस तरह की आज बारी खेली, वो कभी भी मतलब फ़खर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अच्छा लगा आज उनको रन्स करते देख। जी बिल्कुल, हमेशा फ़खर से हमारी यही उम्मीद है कि जहाँ भी ये खड़ा हो जाता है तो आपको टीम को विनिंग की तरफ लेके जाता है, तो वही हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा फॉर्म में आया, उनके बल्ले में बॉल लग रहे, तो होपफुली इंशाल्लाह आगे के लिए अच्छा ही होगा। और नाफे भी जिस तरह वो खेल रहे हैं, जिस तरह की शॉटें वो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लग रहा है कि बतदरीज उनके एतमाद में भी इजाफा हुआ है। जी बिल्कुल, आप एज ए बैट्समैन आप जब परफॉर्म करते हो, रन्स करते हो, तो कॉन्फिडेंस आता है, और फिर इसके बाद ये है अगर अपने कॉन्फिडेंस को कैरी करना, उसको लेके जाना प्रेशर के मैचेस में, वो मेरे ख्याल में एक बड़ी प्लेयर की निशानियाँ हैं। तो होपफुली वो के साथ बात करेंगे कि इंशाल्लाह इसको जो फॉर्म है उनको लेके जाए और जो हमारे प्रेशर के मैचेस आ रहे हैं उनके काम आए। आपने प्रेशर मैचेस की बात की, फैसलाबाद में भी आप आखिरी स्टेजेस तक गए, बड़ा सीनियर आपका कोचिंग स्टाफ है, आपकी एक अच्छी केमिस्ट्री है मेंटोर मिसबाहुल हक के साथ और बाकी जो कोचेज़ हैं, एजाज जूनियर, समीउल्लाह न्याजी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह मिसबा भाई सबको सपोर्ट करता है और मीटिंग में भी बताता है, यहाँ उनको पता है कि अब क्या करना है, और बैट्समैन से भी बात करते हैं, बॉलर से भी बात करते हैं, तो उनको हमें बड़ा फ़ायदा है। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और कंग्रेचुलेशंस एक और जीत के लिए, और आइंदा के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी, थैंक यू। That was Iftikhar Ahmed, ladies and gentlemen, and that's all from down here. Yeah, it was UMT Marcos dominating the day. This has been a marvelous performance. This is how the match stands. Angry Dolphins were asked to bat first. All they could manage was 139 runs for the loss of 8 wickets. Waqar on his debut scored 55. Qasim also contributing with 31. Nisar was the pick of the bowler, getting 4 wickets for 22. Akif also getting couple for 28. And in reply, they were in hurry, UMT Marcor batters, as they chased down the total in 14.1 overs. Fawad Nafe again showing some form and class, scoring 66 not out of 44 deliveries. Fakhr is back in form with 53 of 34, and the result going towards UMT Marcors, who won the game by 8 wickets. Very happy captain Iftikhar Ahmed, just enjoying with the fans. He's being followed all over the world. He's such a fan person. They all love him around the world, and he responds to them. Such a great man, great performer also, and he's a very happy man because his team is winning also. Well, that was it for today, but tomorrow we've got another big game coming up.
It's Newport Lions taking on Lake City Panthers, that number 3 position on stake, and these two teams are definitely looking for that position. We'll be live from 11:45 in the morning tomorrow from Rawalpindi Cricket Stadium. Until then, goodbye. Bowled in, Tahir Beg went for the full shot, it went under his bat. And it's driven beautifully by Bukal through the gap. आसान से यहाँ पर मुकम्मल हुए. Qasim Akram gone for the big shot. बॉलर के सर के ऊपर से वार किया खुल के फखर जमान ने. बैक टू कर जाकर खेल दिया शानदार तरीके से. ये 6 रन. And he gets to his half century. It has come in double quick time, Lucky. Goes big, goes massive. That's 50 for Khaja Nafe. Watch out for this boy. Well played, Khaja Nafe. मार्कोट ने मैदान मार दिया है. 8 मिनटों से यहाँ पर शिकस्त दी है डॉल्फिन्स को. More passion, more energy. फोन स्टक हो रहा है. हाँ, फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. सेंसरी रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसरी रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स. More passion, more energy. फोन स्टक हो रहा है. हाँ, फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. More passion, more energy. फोन स्टक हो रहा है. हाँ, फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. More passion, more energy. फोन स्टक हो रहा है. हाँ, फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. More passion, more energy. फोन स्टक हो रहा है. हाँ, फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. More passion, more energy. फोन स्टक हो रहा है. हाँ, फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from ₹26,999. More passion,
More energy. फोन स्टक हो रहा है. फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from rupees 26,999. Game on है. More passion. More energy. फोन स्टक हो रहा है. फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from rupees 26,999. Game on है. More passion. More energy. फोन स्टक हो रहा है. फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from rupees 26,999. More passion. More energy. फोन स्टक हो रहा है. फिर से फंस गया. Phones इतने awesome कि ad खुद बन जाए. Now introducing all new Galaxy A06, starting from rupees 26,999. Game on है. Five of Barrier Town Champions Cup. We're all set for the toss. The two captains, Shaheen Afridi for the Lions, Shadab Khan for the Panthers, Iqbal Sheikh, the match referee, all in readiness. Shaheen is gonna give it a spin. Heads. Heads is the call. Heads it is. Shadab, क्या करेंगे? हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बैटिंग करें. But no surprises there, whether it's a day game or a day-night game. Sides want to bat first after winning the toss. This is their combination. He just mentioned Shadab, 2 changes. Good addition, all-round. Oh, he's an all-rounder, Arafat Minas, really. Those youngsters who already featured in for Pakistani A teams, under-19s and Shaheens. And yes, Shadab had a good game with the bat, with the ball, and also as a captain, I think he made good moves. How to use his fast man, Hasnan, he was very important, vital. His 5 wickets were for the team's sake. And then Usman Khan played brilliantly the other night. I think he needs to repeat. And Siam just needs to avoid that no-look shot for some time. If you look at the whole combination of Lakes, it is more like their way of playing the PSL, Shadab. 1, 2, 3, 4 all-rounders. Yes, you see teams reflect the mindset of a captain, and that's very evident, very clear in Lake City Panthers side. Okay, and let's have a look at the Nurpur Lions being led by Shaheen Shafri. They also have a couple of changes now. They have made a tough call here. Ahmed Jamal has been left out and they've got Ahmed Daniel. And they've also made one more change where Irfan Niazi gets to go. That's an important one. Yes, and for them, I think they need to fire as a team. Their top order needs to bat for longer. And then the bowlers up front, they have to put pressure on the opposition and keep maintaining it. Because we've seen teams lose a couple of wickets in the first power play, then recover and post a good score. Or in yesterday's case, whatever is posted, it just cannot be chased. Any differences you'd feel in a day game in terms of score? Well, I think that little bit of movement, exaggerated movement that you can see in the night when the match starts in the second innings, that might not be the case today. And more hotter periods to contend with the boys under the sun. Yesterday we were talking to Rizwan and he said we saw the pitch, we thought that 280, 290 is a good total. And it was the case that he went back to the first. But, so here we are for match 5. It's a day out for the two teams because it's a day game. And we'll look at the toss once again to remind you, the Lake City Panthers, that's Shadab and his team, have won the toss and they've decided to bat first. Shaheen and his men will have to bowl. It's match 5 of the Barrier Town Champions Cup. Enjoy. Good morning, bright and early in Faisalabad, and what better way to kick off your Monday
and with some thrilling cricketing action live from Iqbal Stadium, where the men in yellow, the Nurpur Lions, are taking on Lake City Panthers, who got one victory so far in this tournament and in search of another one. But really, they would like to turn the tide. Nurpur Lions, they have played only in single game and in solidarity game. They could not even get to the taste of the victory. Azan Awais is back in Lake City Panthers, a talented youngster, Pakistan under-19 captain. The previous outings so far in this tournament or in listed cricket, he's considered a new kid in the block, but promising with a lot more talent. And when you talk about talent, Sam Ayub is full of it. He got some starts during this tournament, but still searching for a big innings, that this could be his morning. Picture perfect conditions for him. 3 centuries already in early days of his career. Only 20 years of age and a decent average of 40 as well. Also having 750 so far in List A cricket. On the other hand, he will have to face the heavy metal as Nurpur Lions are in search of their first taste of victory, and who else than Shaheen Shah Afridi could be the bowler to orchestrate a better wave for them. A lot of experience for him, more than 100 wickets, 60 matches, and a decent economy as well as far as this day cricket is concerned. So this is the first time we are having a day game in Iqbal Stadium, Faisalabad. Everything is looking in perfect shape. They are good to go with a couple of slips and a typical offside field, but also having some protection on the onside, considering that the left-hander Sam Ayub is going to face this bowling. All in readiness for this game to begin, the first one of the day games in this Barrier Town Champions Cup. Here we go. With a white, it's a good time to welcome Shah Faisal in the comment box. Good morning, Shah Faisal. And this is going to be instrumental for them. One victory, one loss, going to be instrumental how they are finding their way in this tournament. It went between the two fielders. None of them went for it. Shaheen couldn't believe. Was it going to carry to the first slip? It didn't look like it. Irfan Niazi, the second slipper. I feel going towards it right. Probably it would have been his catch. We'll have another look, but an opportunity went begging. Yeah, you need a cup of coffee in Faisalabad between Abdullah Shafiq and Irfan Niazi. Both kept on looking to each other. It was also dying in between them, but there was a chance nonetheless that has gone begging. Sirajuddin playing in his 7th game, 8 wickets so far. Impressed everyone, but still didn't play any role to make a game out of it in the previous one. And once again, Ash, and this time format of the game, you just have to look at the top 10 rankings of the bowlers. It's always spin and specifically leg spin. So great work from Mackenzie there to get that breakthrough, and this is a big phase of the game now. It was actually pretty impressive in his first game over in Perth, actually. Young Mackenzie controlled his length nicely over there. I was surprised to see that one in the first over that got hit back down the ground, because he was
Got a low trajectory. Bowling. Fires it in quite quick and quite flat. Good matchup as well, because Matt Renshaw is a very good player for spin actually, and has got that long reach. So if he does miss his length slightly full, he'll be looking for that step hit that he hits so well straight down the ground. Right at 9, Steve. And sweeps. He loves sweeping the spin too, doesn't he, Renshaw? Both ways. Conventional and reverse sweep. Bit of a Cam Smith look-alike with Hamish McKenzie. 100%. 100%. I said it the other night, actually. I like that. 1 for 59. Run rate has gone up to 8.67 from an original rate of 8.15, but no real cause for concern for the Brisbane Heat. Curran's going to continue from the members' end of the MCG. Pearson's got to start now. Needs to get the scoring rate moving along. That'll help. Cut away for 4. Don't bowl there. Do not bowl there to Jimmy Pearson. That is bread and butter. If you read Tom Curran's lips there, he'll tell you exactly what he thought about that ball. It wasn't his best. You can get away with that if it's a slow ball on that line with no pace on it, but with a pace on and that width, you put those away every time. He's mixed his pace so effectively. That though, 129.6 k's an hour. Interested to see that they haven't gone for Brodie Couch to get him in the game. You would have thought, obviously, after a wicket, you could get him into the game, and it allows you to have a bit more flexibility towards the back end of the innings, because we know, obviously, Tom Curran is a brilliant death bowler. Talk about three-dimensional cricket. The other thing they might consider with Matt Renshaw now being in there is Bo Webster bowling some off-spin, trying to take the pace off the ball. Certainly looked the hardest when the Melbourne Stars were batting. We saw what Kuhnemann and Swepson were able to do. This attack actually has a lot of sameness about it. Think about Curran, Stoinis, Webster, all very similar. Just adjusting the field here. So Rogers has come across and replaced Webster at mid-off. And Webster's gone into about a second or third slip. What a bad man to have in there, Al. He can cover second, third, fourth and gully. And got unbelievable hands. Absolutely. Well, he goes hard at that. It takes the edge. And down to the boundary it goes. He's taken some outrageously good catches by Webster. Think about some of those tall fielders, Ricky. Think about Cameron Green, and we saw Mitch Marsh in Brisbane. They're so athletic. Matthew Hayden was very good behind the wicket as well, gully or in the slips. Shark Callis, maybe not quite as athletic, but he didn't put too many down. And sure, always good off his pads. I think I enjoyed the celebration from Mitch Marsh. You know, the look of surprise on his face as much as the catch. Such great personality as well. He said it in the press conference post-game that I think he was most surprised that he actually got off the ground to catch it. He said all his teammates bag him about not being able to move, and they go quick there, but someone like Stark with a flashy drive like that, they fly.
12 runs off this over with a ball to come. The Curran had been very effective in his first over, mixing his pace up, conceded only the 4 runs. Lofted down the ground. Renshaw gets a good enough piece to clear mid-on. Stoinis pulls it up. So 14 off the over. That gets things moving in the right direction for the Heat. 1 for 73. Bucket tower's just starting to take shape. How high can you go, youngsters? I think most people would be highly engrossed in the cricket at the moment. Speaking of Cameron Smith lookalikes, or, well, Wayne Wiedemann, a few others, Joe Dirt helped find for a single. Get all types coming to the Big Bash, and the game's all the better for us. Colour and movement, the atmosphere. If you haven't been, get along and enjoy it. It's a great time of year. Exciting form of the game. Fantastic international cricketers involved. So Couch bowling his first over from the Shane Warne stand end. Renshaw pulls him in the air and safely out to the boundary. He didn't mind that. Oh, it's a good shot. I'm not sure about where Kellaway was positioned there. Can bowl about 140 k's an hour, Brodie Couch, and he's sort of 20 metres off the fence down there. You're going to get a pull shot down there, or a really solid clip off the pads to go to that position. And it was the fact that he was so close that did him there. If he's back on the fence, he'd get round and save that easily. Renshaw's having a go. Well, he's just reacting to the field there. He's just hoping that something's full enough. They can hit it straight back down the ground, mid-off and mid-on, up inside the circle. That's always the tricky thing, isn't it? We saw with Paul Walton in the first innings, maybe got a little predictable with that shorter length, and they were able to rock back and flat bat it past him. So it's still being able to mix it up a little bit. There he goes. Bang down the ground. Exactly what Ricky was talking about. It's poor bowling, that. With the field that he's got set, you cannot bowl that length. If you want to bowl that length, fine leg's got to come up, mid-on's got to go back. Give yourself some protection down the ground. And take pace off it as well, of course. Like, you can take him wide, use that kind of cut shot out to the big side, take all the pace out of the ball. But there, especially at this ground, that's just a free hit. Yeah, and now mid-wicket comes up, mid-on goes back, and so now if he bowls the short ball now, he's got a massive gap over between deep backward square and long on. He targeted it to Renshaw, right onto it. They get through for a single. That's just a classic case of the wrong ball to the wrong field on 2 occasions. They've done well here, though. They've dropped that rate down. That rate got up to about 8.5, pushing up towards 9 and over. They dragged it back down under 8. We've got the drinks break to come after this, where they can get together as a group and just start talking about what they need to do from here, what they think with their power surge. But right now, they've got this game under control. They don't need to panic. They just bat for another 2 or 3 overs here. The game will eventually come back to them. They try too hard and try and go too early. That's when you lose these games. The seagull has flown right across the middle of the pitch. And Jimmy Pearson, he's decided that
old Sammy, who's now got a couple of mates. It's been brilliant batting from Matt Renshaw here as well, to take the onus off Jimmy Pearson, who hasn't probably got the fluidity that he can show, but to take that pressure off him has been brilliant from Matt Renshaw. That will be one. They've taken 25 off the last 2 overs. At the same point, at the drinks break, the Stars were 2 for 76. At the halfway mark of the chase, 1 for 84. The city of Melbourne, the sporting capital, always looks magnificent on a clear night, and the focal point, the heartbeat of this city, is the Melbourne Cricket Ground. The history here over the years, the great sporting contests that have taken place on this hallowed turf. Tonight, the BBL between the reigning champions, the Brisbane Heat, and the Melbourne Stars. Heat in a good position, chasing a victory target of 163. Their depth is tested, though. It's not their strongest lineup, so if the Melbourne Stars can find a couple of breakthroughs, then they have the potential to swing this back their way. Stoinis will bowl his second over, this time bowling from the members' end of the ground. Pearson on strike. Running between the wickets has been a feature. Johan Boytart, the coach of the Brisbane Heat, has joined us. Johan, are you happy with how the team's performed tonight? Yeah, pretty happy at this stage. I think 1 for 85 or 84 at the break was probably about 6 or 8 ahead of them, so pretty happy there. But you know, we need to keep our foot on, hit the sweepers hard, and run well. Yeah, man, you've got some hamstring injuries in your group. Have you been making them run as much as you're training or something, have you? No, Ricky, no, I'm not sure what's happening there. We've got a few problems at the moment. There's the feather. Stoinis gets the breakthrough, and Renshaw's damaging knock comes to an end. Happens all the time. As soon as we get a coach on, wicket falls. Johan, if we've still got you there. Yep. How does that change things from your perspective now? Yeah, obviously Ren's played really well this summer for us so far, especially in white ball cricket. So, you know, he's obviously a big loss. He's an important player. I think that would have kept McKenzie out of the lineup for a little bit longer. You know, bowl left arm Chinaman to him, but you know, Max is quite an experienced player by now for 25. So we're going to need this pair to get us hopefully quite a lot closer, and then hopefully a couple of guys to come and put the finishing touches on. So you just alluded to it in a way there, but you've actually taken on all of the roles in Queensland, Johan. You're the coach of the Sheffield Shield team, the one-day side, and the Brisbane Heat team as well. How do you balance the demands of all of that? Do you think it's beneficial to be in charge of all programs? Does it help?
I think it definitely helps, especially with the Queensland boys, you know, to sort of work throughout the year on different things, and you know, they sort of know now what I like and how we like to do things. But I think with BBL, we've really treated it as a franchise tournament. We haven't paid, you know, too much attention too early. You know, the Shield and the One Day Cup's obviously important for us and for all the Bulls boys. So we've given that our full attention, and we've treated the BBL as a franchise tournament, and guys coming in sort of 5 to 7 days before, you know, put in the work then and try and get our game plan sorted and go from there. And Johan, being a spinner yourself, you had to be really impressed with the way that Kuhneman and Swepson went about their work tonight. Excellent. You know, they're both quality performers. They were a big part of last year's, you know, title-winning team, and tonight they were outstanding. I think, you know, especially in Australian, definitely at MCG, you've got some boundary size to work with, but I thought Swepo's change of pace was excellent, and you know, Cooney bowled some tough overs and was brilliant throughout. Feeling nice and settled in Queensland now, mate, in Brisbane? Yeah, it's going well. You know, it's been now about 5 or 6 months, so it's gone really well. You know, it's a bit more humid than Adelaide, but still good running weather all the time. We know you love that. Thanks very much, Johan. All the best tonight for the season. Thank you, guys. Appreciate it. Fine cricketer in his own right, Johan Boyta. My first experience of Big Bash cricket with Johan as well as a senior player at the Sydney Sixers a few years ago now, but thinks about the game brilliantly, all the different components. Was a very tricky batsman in his own right at the back end of an innings, used to play those paddle sweeps and reverse sweeps, and obviously as a bowler bowled all different phases of the game as well. So Stoinis with a very important wicket in that over. They do get back for 2 and take 5 from the over. 2 for 89. So the run rate required, 8.22. So, as Ricky mentioned earlier, had got down to around 7.6. Original rate was 8.15. Wicket from Stoinis. Now a fresh Bryant joining Pearson in the middle as Mackenzie continues. Well, that's a bit of a statement. Pearson said, "I'm going to have a real crack at you." We might need to have another look at what happened in the stands there, because that looks like a bit of a sheepish moment. Oh, the one-hander goes down. Yeah, it was good batting that from Pearson, good use of the feet. I mentioned earlier about all batters here against spin need to think about targeting the straight boundaries. And to do that against quality spin, you have to be courageous enough to use your feet, to get down the wicket and try and get the ball on the half volley. He did it perfectly. Interesting to see if Max Bryant picks young Mackenzie here as well. He's very much a hand-eye, sort of stand and deliver type player. And a nice change of field as well, with mid-wicket coming in from that sweep man. Obviously Jimmy Pearson, a very good sweep of the ball, but trying to get a few dots on here. Max Bryant, that's so key when you get a wicket, is to pressurise that new batter when he comes in. Just looking at how much that turned, they could just about put a slip in. A fraction straight on that occasion. That wrong on the ball before, turned a long way. I think it's vital for Brisbane Heat now that Jimmy Pearson's got about deep into this innings. They'll want him around when that surge is on. The fact that he's faced the 34 balls already, he needs to be there. He needs to get into that surge, needs to maximise it. He was 0 off 8 at the start of his innings. Get it, Tim. Slaps that down the ground, gets it past the bowler Mackenzie.
And again, they return for a couple. How many twos were there in the first innings? 21, I think. And already, you know, you're seeing they're running really well. That was something that Johan Botha spoke about just then on the mic, and such a key component on these big grounds. Very similar to the Gabba as well, so they know these dimensions pretty well. 100 comes up, 2 for 100. Huge crowds going to the start of the Big Bash. We started with a record crowd in Perth and they're loving it tonight as the Melbourne Stars fight back. Scan that QR code and get along to the KFC. BBL 14. Absolute beauty when the Big Bash comes to your city. Get along. The action is red hot as that young person says, go the mighty Stars. Thank you, Richo. Yeah, almost 20,000 in the MCG tonight. You never see a young kid in the crowd at the Big Bash League not having fun. They're always bouncing around and dancing and smiling and clapping and waving flags. Waving at us. It's great to see. Family friendly. Good cricket. Don't skip the opportunity to study abroad. With the Duolingo English test, we can make this Knocked process away a by lot Pearson. less stressful. Running hard for the first, but never two on offer there. That's something that's always struck me as an overseas player coming over here, the focus on families around the games. It is fantastic to see, and obviously it's the next generation of cricketers in this country. And something that we probably picked up on with the 100 back at home has been a real key push for families, and something that we've definitely learned off from the Big Bash. And the time you give to kids in and around the game is so important by every single player. And 5 in the ring now, trying to save a single here to Bryant. Oh, it's just going down leg. It's just going down, I reckon. They used their review very early. So what Marcus Donis is trying to say there is the fact, because they've used their review, he's telling the umpire that he should then give it out and then make them use theirs if they want to have a look at it. I'm not sure that would have ever really crossed the umpire's mind. That was going down, I called it straight away. It was a very firm appeal. Don't Desperate for a wicket, the Stars. They know how important a stage of the game this is. We can make this process a lot less stressful for you and your wallet. Simply Good captaincy sign up down on our again. website. Complete your test in Single 1 ball. hour, and in 2 days, Gives you a you'll variety receive of your options. results. You've got a all without having to leave your home. single, Sign up and then today now the and start pressure's back on the practicing batting with team. Last 2 balls of the over, they want a boundary. They need a boundary every single over in this innings. So these kind of overs, knowing that Adam Milne, for example, can come back on at any point to potentially get a wicket. This is a crucial over from Marcus Stoinis here. Good on the pad again. That's a bit close, I think. The appeal was a much more abbreviated version of the previous one, but looked closer. Yeah, it did. The line looked slightly better. Or maybe just going down as well. It's amazing what a couple of dot balls do, though. Going into this over, the required rate was 7.88. It's the 2 dots and the 3 ones, and it's already pushing up to nearly 8.5. These are the overs you have to close out as a bowling team. A good over like this, you can't afford to go for a boundary at the end of it. That's gone up, and it will land safely in the outfield as 3 Stars converge. Big pockets. 5 from the over, 2 for 105.
Stars are changing things up. Campbell Kellaway's going to come on for a bowl. And those worms intersecting. Stars, green line, back ahead. Original rate 8.15, run rate required now 8.29. 3 in the deep on the leg side, Kellaway bowls. So Campbell Kellaway just making sure that his front foot's okay. Coming with Ben Trelaw, the umpire. Lofted down the ground all the way for 6. Bryant's a powerful batsman. And that was a step hit for him. He started so well too. The ball before this was pushed into the wicket nice and flat. Just landed way too forward. It's a good simple swing of the bat from Bryant. And we know he's got all sorts of power. Just needs to keep his shape, trust his arms, trust his swing. And that's a long way back. First boundary for a couple of overs. Feels like a game that's going to swing on little moments. Well, they've got a surge up their sleeve. They might be thinking about the next couple of overs too, you'd think. We're in the 14th over now. That's why they've gone to this over of spin now, I think, to try and save their better bowlers for those couple of surge overs they've got coming. Pulled away, racing out towards the deep. Rogers is there. If you like twos, you've had a good night at the MCG. Depends if you've got to run them or not. Yeah, that's true. Absolutely, especially back to back. Well, you can see why Dean Jones loved playing here so much. Revolutionised the one-day game with his run between the wickets. Well, Kel, good line. He used to tell you as a coach as well. He used to tell you where to run. I remember the first year I played with him at Islamabad United and Pakistan Super League. He gave us, marched us out into the middle and told us where to stand when you were backing up. So, yeah, those little details, he loved it. Good finish. So 11 off the over. 6 to come, 2 for 116. Pearson took a while to get going. And he's approaching a half century now. Good start from Jack Wood on return to the Big Bash League. 27 off 21. Renshaw, as much as he was only out there for a short time, did drive the run rate forward in a meaningful way. And they've gone back to Milne here as well. That, to me, says they're looking for a wicket. They're looking to break this partnership, trying to get a new batsman out there before they eventually take their surge. Great piece of fielding. Rogers on the dive at backward point. Still would like to see that fine leg, little details, especially to someone like Jimmy Pearson. We saw that ramp shot with Adam Milne's pace. You need him so fine. Still quite wide on the screen there, as you can see on your screen at home now. On the edge of the red boards. There's probably more the line you need to be. As I say that, it's gone straight to him. There we go. Oh, you're learning a few things tonight, Sam. It's got a wide serve ball down the leg, exactly where you want to. This role has a real habit of throwing up situations like that. It's great to have you a part of it. Yeah, I appreciate it. It's a lot harder than it looks up here.
Sure, not quite as hard as it is out there. Hit away firmly. That's a good shot. Now, there's one man you would never return for 3 on in that scenario, and it's Hilton Cartwright. Yeah, this is a really big over, I think, for the Melbourne Stars. Required rate's just 8 now. They would seemingly have this game under control, but if the Stars can get a wicket here, then these games can change really quickly. And if he goes back to his main strike bowler here and he doesn't get a wicket, then you start as a captain, you start looking around the field thinking, where am I going to get this wicket from? Pulled hard into the deep. It's for a single. Kellaway whips it in. So who will bowl the surge overs, do you think, when that time? Curran will bowl 1 for sure. And Stoinis might bowl himself, actually. It's been effective tonight, Stoinis. 3 overs, 1 for 14. You talk about getting a wicket, it's not a bad option to back his straight Yorker here as well, to go at the pegs. It's worth the risk here. That's what he looked like he was going for, Sam. No. Bit better than the previous call I made, I think. Just keep throwing him out there and you land a few. 50-50. That's the key thing. When you set a field like that, you're obviously setting it. As a batsman, you're setting on the back foot because you know you've got mid off and mid on up. So it's worth the risk if you're desperate need from a bowling unit for a wicket. Edged and wide of Harper and down to the boundary. So he drew the edge, but they get 4 more. 9 off the over, 2 for 125. Here's young Mac doing the honours. Power surge time and he loves it. He's pumped. 6 years old. Marcus Stoinis is his favourite player. Mac, you might see him bowl one of these power surge overs. It's going to be Tom Curran first from the Shane Warne stand end. He dances a lot like Stoinis as well, actually, that kid. Little more mobile, I think. There's the 50 for Jimmy Pearson. They settle on 2. It's been a fine knock. He struggled to get going. He's managed to find some rhythm. He seems determined to take a depleted Brisbane Heat to a victory in their first game of the season. Yeah, good knock. Very, very good knock from an experienced campaigner. We said with a depleted squad, the senior guys have got to step up, and he's played that anchor role beautifully, and the guys around him have managed that intent, and they've played really good batting partnerships throughout this innings, but he'll be wanting to go big and see this through for the Heat. Short, pulled away, that'll be a boundary. Well, we talked earlier about Brisbane being depleted and presenting opportunities for younger players. It's actually presented an opportunity for Pearson as well. If you think about their strongest side, he's probably not in it. He wasn't in it for most of last year when Munro and the overseas batters were there. Sam was there. So he gets an opportunity at the top as well. And he plays like this. If he can play a match-winning knock here, then all of a sudden the selector's got something to think about. Keep yourself in the team and win a game for your team. Cartwright in quickly.
one of the two permitted to be in the deep during the surge. So he's at deep mid-wicket, and Rogers at deep backward square. Well, it's a pretty complete wagon with that, really. Scored all around the ground. I said earlier on, he's predominantly strong square of the wicket offside, which is why he's got so many runs on the leg side, because teams adjust. They bowl straight it to him. So it's not unusual to see a wagon wheel like that for a strong offside player. That is hit very hard out to the long boundary. One bounce over the rope. Bryant muscles one out through square leg. He's definitely got some ball striking talent, this kid, no doubt about it. Wasn't that short. He sort of squatted into the shot to get the elevation that he needed. And once again, the awareness, I think, is out here for the Stars fielders. Max Bryant's going to look, he's going to try and clear you out there. He's going to try and hit the fence, especially in the surge. You can afford to stay a little bit deeper. 11 off 4 balls in this over so far. And that rate now down to nearly a run a ball. Great batting in terms of managing that partnership so well, pushing the button when you need to. It's been an exhibition so far, and these two Queenslanders through and through, they want to be there at the end. So from a player's point of view now, you put yourself in their shoes. Are you, even though you know you've got it down to just over 6 runs and over, are you trying to cash in on this ball and the next 6 of the surge, or are you playing more responsibly not to lose any wickets? Cersei, kill the game. Kill the game. Use the surge to it completely. Take any sort of result out of it. And the end of the 16th over, that's 2 for 138. He's missed out there, actually, Max Bryant. It's not one of his shots, though, but he's got the field to be able to do that. He's much more of a stand and hit sort of guy. Big over this, I think, big over in the game. If they can strike here, they can drag themselves back into the game, the Stars. Excellent bowling from Stoinis. He's hurt his finger there on the pitch. Don't know whether he's dislocated his finger, but he's in a lot of pain. To trap that ball, finger went hard into the pitch. Maybe he's stubbed that finger. Well, it must have popped out and gone straight back in, because it wasn't hit with that much force to sort of worry it too much, but just jammed it down into the wicket. Yeah, it might have just popped out the side there as well, that little finger. Good bowling.
valiantly trying to prevent the single. I think he's saying it's okay. If my lip reading tells me anything, we don't want to be lip reading there. As you said, Ricky, you can feel the tension around this little over, this little period of the game. Next 3 balls. Get a fresh batsman out there. Start to put the run rate pressure on again. So Stoinis good to go. Pearson waits. It's hard, but won't get it through the infield. And Kellaway keeping Bryant honest at the non-striker's end. Yeah, that's another one you feel he missed out there, Jimmy Pearson. That was right in the slot for the field that is set. On a mid-wicket up inside the circle, it was there, it was full enough. Just tried to overhit it, got the inside half of the bat. Just 2 off this over though, with 2 balls to go. This is where the pressure starts going back on the batting team. Even though they're under 7 runs and over, there's pressure building here. Again, he picks out Kellaway, but it goes through his legs. And the frustration echoes around the MCG. What should have been 1 is 4. Well, you've got to get something behind that. This is a huge moment in the game. A huge ball, in fact. It's a bit lazy. Make the yards early. Get there as quick as you can and get some of your body behind it. Body height was too high, didn't get down low enough. And with that little bit of dew on the grass, it skidded underneath it. And a dot to finish the over. So 6 off the Stoinis over. 2 for 144. So there's potentially a bit of a worrying pattern developing for the Melbourne Stars. When batting first since January the 1st, 2023, Melbourne Stars have not won. Lose tonight, it would be 10 in a row. Brisbane Heat, at the top of the tree there. And more broadly, the Sydney Thunder will change that this year, don't worry about that. Well, they've recruited very well, Stan. Reverse sweep in the air and drops. It would have been some catch from Curran. He got both hands to it. It just did not quite stick. Just a couple of costly errors in the last 3 balls of this game so far. They misfielded mid-wicket, and then a great effort has to be said. He probably got there easy enough in the end. Not a lot of pace on the ball. If anything, those type of shots tend to dip on you in that position. And now advancing. That hurts. That really hurts. It's great batting, though. It's Murphy's Law in this game, but it's great batting. It's great use of the feet once again. You let good players off, and I know Jimmy Pearson wasn't the one dropped, but he probably does. If that catch is taken, he probably doesn't play that shot. Well, he wouldn't have been on strike anyway, but you know what I'm trying to say. Slight miss of length. That's what they've just probably erred on tonight compared to the Brisbane Heat bowling attack, which was so good at holding their length. Small margins. Well, how they got through for a single there. It's a little sloppy from the Stars. I know we say it time and time again, and it's the same chat. Every dressing room has it, but fielding is a perfect kind of showcase for you as a group in terms of your attitude and where you're at as a group. And at the moment,
hit out into the deep at Cal corner. It'll land safely and go to the rope. The Brisbane Heat are taking this game away from the Melbourne Stars, and they're doing it with great force and effect. That's a great shot, that. It's great use of the feet again, but this is going back on this occasion. We saw Pearson use his feet down the track. He rocks onto the front foot, Max Bryant gets back, and most importantly, gets his left side out of the way and opens up that whole leg side of the field. That is some very good placement. Webster will cut it off. This has been fantastic batting. Started off by Matt Renshaw to come and change the game in terms of momentum, and Max Bryant has just continued that. I think this is a huge development in his game against spin. He used to obviously bat at the top of the order like pace on the ball, but how he's played spin, used the depth of the crease, has been fantastic. Goes hard again. Placement again a feature. Two more. What a partnership this is. 2 overs to go and only 3 needed for victory. 2 for 160. See the frustration, Marcus Stoinis. And the position the Stars find themselves in now is a difficult one, having dropped their first 2 games of the season. Away that goes for 4, not quite. But it will be a couple. And they're coming back for 3 to win the game. The Brisbane Heat, missing a host of their star players, have beaten the Stars at the MCG. The defending champions came in as gross underdogs tonight, and they achieved victory. It says much about the Brisbane Heat. What does it say about the Melbourne Stars? Well, that's about as good as win as I've seen in this competition. When I got here today and heard the outs that they had, knowing how big this game was for the Stars, first game at home, MCG, pretty good side that they put out. Remember, Max was not there either, and a couple of their overseas are not there. But when you match the 2 teams up, there's no comparison. And they've won with 2 overs to go. It's a terrific run chase. Jimmy Pearson's highest ever BBL score, opening the batting to steer the ship home. Terrific win for Brisbane. That will do wonders for them as the season goes on, considering when they get their better players back. What are your thoughts, Sam Billings? Yeah, just to echo what Ricky said, quality performance. The older player kind of stepping up, playing that anchor role, and as we said, brilliant partnership batting. Max Bryant obviously at the end to be there, but I thought Matt Renshaw obviously only got 18, but really changed the momentum of the game in the middle there. And as you said, you know, that's a great confidence boost. It just looks like a side off the back of a win last year, full of confidence. Those lesser players really stepping up to the plate. There's a bit to dissect in the aftermath. There's a victory to celebrate for the Heat. There's a thought or two to be gleaned around the performance of the Stars. They will get Glenn Maxwell back for the next game. Ben Duckett's on the way as well. But you do turn up to the MCG tonight. I think that's a game that the Stars should win. Well, they'll get their batters back, but it was their bowlers tonight, wasn't it? Let them down a little bit. I mean, yes, it was a competitive score. It wasn't a match-winning score by any stretch of the imagination, but if you look at that bowling attack tonight, there's too much sameness about it. Not enough variation. Spin dominated from Brisbane Heat. The Stars go in with only the 1 spinner. So they've got a lot of questions that they've got to answer them very quickly. Well, tomorrow night, Ricky's Hobart Hurricanes get their first opportunity. They'll take on the Melbourne Renegades, a team that on paper looks very strong this season. Played well against the Sydney Sixers, but ultimately couldn't claim the win. And the Hobart Hurricanes with no...
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद से हम आपको वेलकम करते हैं कायदे-ए-आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स 2024 के फुटबॉल का गोल्ड मेडल मैच जो कि चुल लम्हों के बाद शुरू हो जाएगा। कायदे-ए-आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स 2024 मेंस फुटबॉल फाइनल मैच है। सिंध और केपीके की टीमें आमने सामने होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त मैच की तवक्को की जा रही है और बहुत खूबसूरत मंजर है जिना स्टेडियम का। तारीख साज स्टेडियम 1989 सैफ गेम्स पाकिस्तान ने पहली दफ़ा तलाई तमगा इसी ग्राउंड में हासिल किया था। अपने मद्दे मुकाबिल की बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दी थी और उसके बाद 2004 में पाकिस्तान ने अपने रवायती हरीफ हिंदुस्तान को, भारत को यहीं पे शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया था। बड़ा खूबसूरत मंजर जिना फुटबॉल स्टेडियम का। पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बहुत ही खूबसूरत ये दोनों टीम्स की एंट्री। फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड फीफा का स्लोगन है और दोनों टीमें कुछ लम्हों के बाद ग्राउंड में दाखिल होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सेमीफाइनल मैचेस देखने को मिले शौकीन फुटबॉल को और केपीके की टीम ने अपने मद्दे मुकाबिल गिलगित बल्तिस्तान की टीम को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल मैच के लिए क्वालिफाई करवाया। और उसके बाद आज के हमारे ऑफिशियल्स भी ग्राउंड में आते हुए यासिर रहमान है मैच कमिश्नर, रेफरी असेसर हैं फीफा के, और उसके साथ अहमद रऊफ बहुत सीनियर रेफरी हैं। खानेवाल से इनका ताल्लुक है। पाकिस्तान रेलवे के ये डोमेस्टिक फुटबॉल और बाय प्रोफेशनल मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बड़ी खुशाइन बात है कि एजुकेटेड लड़कों का फुटबॉल में आना और इस डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक और रेफरीज में बड़े अच्छे मैचेस को सफर कर। यासिर रहमान मैच कमिश्नर, अहमद रऊफ, अदनान हैदर है उनके असिस्टेंट नंबर 1 और अदील अनवर जिनका ताल्लुक शौकपुरा से है। फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड फीफा का स्लोगन। जिना फुटबॉल स्टेडियम में एक जानदार और शानदार मुकाबला कुछ ही लम्हों के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध की फुटबॉल टीमें आमने सामने होंगी। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। साये खुदाए जुल जलाल। पाकिस्तान के नेशनल एंथम के बाद दोनों टीम्स के प्लेयर्स आपस में इंट्रोडक्शन करते हुए, शेकन करते हुए शौकीन की तादाद जिना स्टेडियम में मौजूद हैं और सीनियर ऑफिशियल, सीनियर फुटबॉलर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स आपका यहाँ पे आपकी दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए। सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा रेड कलर में केपीके की टीम और वाइट कलर में सूबा सिंध की टीम। दोनों टीम के कैप्टन जुनेद अली गोलकीपर हैं केपीके के, बड़े यंग टैलेंटेड लेफ्ट फुटेड गोलकीपर हैं और उनके साथ फराज हैं 10 नंबर शर्ट पहने हुए। अहमद रऊफ सीनियर रेफरी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल में। पाकिस्तान प्रीमियर लीग हो या पाकिस्तान की नेशनल चैलेंज कप का इवेंट हो, वुमेन चैंपियनशिप हो या एएफसी के इवेंट में भी एएफसी के एलीट पैनल पे भी गए हैं, तो काफ़ी तजुर्बा है इनका। अदनान हैदर यंग टैलेंटेड मुल्तान से इनका ताल्लुक है। उनके साथ फोर्थ ऑफिशियल इस्माइल और गजई जिनका ताल्लुक है केपीके से है और अदील अनवर शेखपुरा से इनका ताल्लुक है। अच्छा तजुर्बेकार रेफरीज का पैनल आज के इस गोल्ड मेडल मैच को सुपरवाइज करेंगे। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल गोलकीपर, पाकिस्तान आर्मी के भी कप्तान रहे हैं और पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए काफ़ी लंबा फुटबॉल खेले हैं और डोमेस्टिक फुटबॉल भी काफ़ी अच्छे तक खेलते रहे हैं। जाफ़र खान जिनका शहर देहरा इस्माइल खान है और पाकिस्तान आर्मी के लिए खेले हैं। थैंक यू वेरी मच जाफ़र खान, आप तशरीफ़ लाए। क्या कहेंगे, आज का एक बड़ा ही जानदार और शानदार मुकाबला होने जा रहा है केपीके और
सुबह सिंध की टीमों के दरमियान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असल में आज का जो फाइनल मैच है बहुत ज़बरदस्त मैच है माशाल्लाह, और मैं इनके बाकी मैचेस भी देख के आया हूँ। दोनों टीमें बड़ी अच्छी टीमें हैं और दोनों बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर इसमें जो है ना तकरीबन कोई 15, 16, 19 वाले प्लेयर इसमें जो है ना शामिल है, नेशनल टीम के प्लेयर है। और दोनों टीमें बड़े फुटबॉल जानते हैं और खेलते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है ना दोनों टीमें जो है ना खेलते हैं। और कराची की जो टीम है उसमें 2-3 भाई है जो कि मामा जफ़र के बेटे हैं और बड़े अच्छे खेलते हैं। ये उसका एक टीम कैप्टन भी है। और खैबर पख्तूनख्वा में भी तकरीबन अंडर 16 के कोई 4-5 प्लेयर खेल रहे हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें एक 16 का कैप्टन भी उबैद है, वो भी खेल रहे हैं, जुनेद है, ये भी है। और उनका गोलकीपर जो है जुनेद, ये भी बड़ा एक्सपीरियंस रखता है टीम के लिए और बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। शुरू से पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल के आ रहा है जुनेद। दोनों गोलकीपर अच्छे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा की टीम ने सेमीफाइनल में गिलगित बल्तिस्तान की टीम को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी PIA के लिए और हबीबेन के लिए मामा उमर जफ़र के बेटे हैं। फुरकान उमर और सलमान उमर 2 भाई हैं। आज के इस सिंध की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं नंबर 10 और नंबर 11। उमर ब्रदर्स आप देखेंगे बड़े ही टैलेंटेड, बड़े ही ख़तरनाक खिलाड़ी हैं। इनको देखना होगा KPK की टीम को कि किस हद तक ये ख़तरनाक साबित होते हैं। लेकिन डिफेंडर जहाँ के KPK की टीम की भी कोऑर्डिनेशन अभी तक देख रहा हूँ 4-3-2 के फॉर्मेशंस के साथ नज़र आ रही है। जाफर खान बिल्कुल जी, KPK की जो टीम है तकरीबन वो 4-1-3-2 से वो इन फॉर्मेशन है। कराची की जो है वो 4-2-4 फॉर्मेशन से वो खेल रही है और मैच शुरू हो गया। ये सलमान उमर हैं, खिलाड़ी हैं। कान उमर की तरफ बॉल गई है, खतरनाक हो सकता है डी के अंदर, और जी हाँ डेंजरस एरिया और टाइम किया था, लेकिन अहमद रऊफ ने कॉर्नर किक दी है। पहले ही लम्हात में सिंध की टीम की तरफ से फुरकान उमर जो कि कैप्टन भी हैं सिंध की टीम के, एक अच्छी बॉल डिलीवर की थी। उनके छोटे भाई ने उनको बॉल को डिलीवर किया था। उमर ब्रदर्स जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं, PIA के साबिक इंटरनेशनल खिलाड़ी। अच्छा भाई, इसका दोनों भाइयों का बड़ी आपस में बड़ी कम्बिनेशन है। बिल्कुल, ये देखो रिप्ले देखो, आप देखो ना, अभी गोलकीपर भी इसमें जो है ना थोड़ा सा डिले हो गया, जिसको पहले आना चाहिए था। अगर पहले वो आता तो आराम से वो बॉल ले सकता था, लेकिन वो डिले होके जो है ना वो इस वजह से जो है ना वो कॉमन हो गया उससे। दोनों भाइयों की सिंध के जो प्लेयर है, दोनों भाई मामा जफ़र के बेटे जो है, वो दोनों की आपस में बड़ी अच्छी कम्बिनेशन है। और मेरे ख्याल में एक बेटा तो मैंने हमें टॉप स्कोरर के उस दौड़ में भी उसके साथ मेरे ख्याल में है, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों में से जो है ना प्लेयर है खैबर पख्तूनख्वा के और सिंध के दोनों प्लेयरों आज के मैच के ऊपर है। मेरे ख्याल में एक गोल ज़्यादा है उसका खैबर पख्तूनख्वा। जुनेद अली KPK का गोलकीपर जो है बड़ा अच्छा गोलकीपर है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान, साबिक इंटरनेशनल गोलकीपर जाफर खान हमारे साथ मौजूद हैं। कॉर्नर किक सिंध की तरफ से डेंजरस एरिया के अंदर, खतरनाक हो सकता है। और जी हाँ, हैंडबॉल हुआ पेनल्टी एरिया के अंदर, डेंजरस था। और जी हाँ, डेंजरस एरिया के अंदर ही डेंजरस हुआ और प्लेंटेड अवार्ड टू द सिंध टीम। जी हाँ, पहले लम्हात में डिफेंस शफल होती है, ये लम्हात खतरनाक होते हैं दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम्स इससे ये देखिएगा रिप्ले में कॉर्नर किक लगी और डिफेक्शन के बाद हैंडबॉल हुआ। जी हाँ, क्लियर हैंड था। 8 नंबर की शर्ट पहने हुए KPK के डिफेंडर वहाँ पे मौजूद थे और अहमद रऊफ ने कोई गलती नहीं की और पेनल्टी मिली है अब सिंध की टीम को। फुरकान उमर वर्सेस जुनेद अली। अब अहमद रऊफ की बड़ी अच्छी जजमेंट, बिल्कुल नज़दीक थे। जितना रेफरी क्लोज होता है प्लेयर्स के, उतनी गलती की गुंजाइश कम होती है। असल में ये अहमद रऊफ में ये क्वालिटी है कि वो पूरे मैच के साथ जो है ना वो जाते हैं। जी हाँ, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। जुनेद अली भी क़यादत कर रहे हैं, कैप्टन वर्सेस कैप्टन। सिंध की तरफ से कैप्टन पेनल्टी लेते हुए और बहुत ही ज़बरदस्त पेनल्टी लगाई, कंप्लीट बीट किया फुरकान उमर ने। सिंध की टीम को पहले ही लम्हात में बढ़ती दिलवाई है। जी हाँ, कोई चांस नहीं था जुनेद अली के पास।
बहुत ही तहम्मुल के साथ गोलकीपर को बिल्कुल बीट किया जाफर खान। बड़े कॉन्फिडेंस से इसने पेनल्टी को जो है ना मारा और बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं था इसके ऊपर के मतलब पहले 5-10 मिनटों में जो है ना इसको पेनल्टी मिलेगी। प्रेशर होता है गोल करने और ये देखो ये प्ले देखो गोलकीपर को डॉज करके जो है ना इसने एक साइड पे मार के आराम से गोल कर दिया और सिंध के लिए ये बड़ा अच्छा है कि पहले गोल कर दिया उन्होंने। जी हाँ, खुबैब थे 8 नंबर के केपीके के जिनका हैंडबॉल हुआ था और फिर अटैक है सिंध की तरफ से, लेकिन थ्रो इन मिली। कायद-ए-आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स 2024 फुटबॉल गोल्ड मेडल मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पे आप लाइव देख रहे हैं। सिंध की टीम को खेल के शुरू के लम्हात में ही एक गोल की पत्ती हासिल हो गई है फुरकान उमर के जरिए। उमर ब्रदर्स सिंध की टीम की रीढ़ की हड्डी हैं क्योंकि इन्होंने सेमीफाइनल में भी बहुत उम्दा खेल पेश किया। स्कोरबोर्ड पे भी आप देख रहे हैं 1-0 की बढ़ती हासिल है। अब केपीके की तरफ से अटैक है। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं केपीके के भी और अवैस है, हास है और उनके साथ खुबैब हैं लेफ्ट आउट की पोजीशन पे डेंजरस एरिया के अंदर, लेकिन आउट ऑफ द वे बहुत वे थी और बर वक्त पहुंचे डिफेंडर केपीके के। अच्छा भाई असल में ये दोनों टीमें जो है ना एक ग्रुप की निकली हुई टीमें हैं और इनका आपस में जो ग्रुप का जो मैच था वो केपीके ने 5-1 से जो है ना सिंध से जीता था और आज माशाल्लाह दोनों टीमें जो है ना वो फाइनल खेल रही है आपस में। जी हाँ, ठीक है और अच्छी कोशिश थी, कैप्टन ने गोल किया था। कैप्टन के छोटे भाई की अच्छी कोशिश थी। सलमान उमर इस दफा थे, पहले फुरकान उमर थे, अब सलमान उमर थे। ये देखिएगा बहुत अच्छी ट्राई थी और जुनेद अली ने टच हुआ था बॉल, लेकिन जी हाँ। और ग्रुप ए की दोनों टीमें हैं जिनके ग्रुप ए में पहले ही मैच में 5-1 स्कोर था केपीके की टीम को। बड़ी नफसियाती बढ़तरी हासिल थी, लेकिन बड़ा अच्छा कमबैक किया सिंध की टीम ने अपने पूल मैचेस के अंदर भी। और फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं फरहान कादिर जो कि हेड कोच हैं पाकिस्तान नेवी के लिए, डोमेस्टिक फुटबॉल खेलते रहे फरहान कादिर। शफी 11 कराची के क्लब के खिलाड़ी हैं और इसी तरह फुरकान उमर और सलमान उमर भी मलीर कराची से इनका ताल्लुक है। द सिटी ऑफ फुटबॉल कहा जाता है पाकिस्तान में कराची को और बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, बहुत पोटेंशियल है। ये यंग टैलेंटेड प्लेयर्स अटैक है। अब डेंजरस एरिया के अंदर जाना चाहते थे, थोड़ी सी सिमुलेशन की उन्होंने, लेकिन अहमद रऊफ को चकमा देना मुश्किल होगा क्योंकि एक सामने एक तजुर्बेकार रेफरी हैं आपके। असल में रेफरी अहमद रऊफ जो है ना बड़ा क्लोज करता है बॉल के साथ, बड़ा क्लोज रनिंग करता है और इस वजह से जो है ना उससे जो है ना वो मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। उसकी पूरी जजमेंट जो है ना बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो है ना वो यही होती है कि वो मैच को बड़ा क्लोज करता है। जहाँ जाफर खान कॉम्बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं। गोल्ड मेडल मैच है कायद-ए-आज़म इंटर प्रोविंशियल गेम्स 2024 फुटबॉल का फाइनल मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पे आप लाइव देख रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा और सुबह सिंध की फुटबॉल टीम। जी हाँ, अटैक है और थोड़ी डिले कर गए और मेहरबान देर कर दी आते आते क्योंकि स्ट्राइकर दूर थे थोड़े से। गोलकीपर के साथ जो है ना कम्बिनेशन नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वरना ये गोलकीपर आराम से बॉल ले सकता था अगर वो क्योंकि बड़ा जुनेद अली के पास बॉल आई है और गोलकीपर हैं केपीके के, कैप्टन भी हैं, काफ़ी भारी जिम्मेदारी है इन पे। खैबर पख्तूनख्वा बॉल पोजीशन को बनाते हुए, लेकिन ग्राउंड बॉल बहुत अच्छा खेलते हैं सिंध की फुटबॉल के प्लेयर्स। सिंध की आपस में बड़ी कंबाइंड टीम है सिंध की और बहुत अच्छी डिफेंस लाइन और मिडफील्ड की आपस में बड़ी कम्बिनेशन है और उसमें मिडफील्ड में एक फराद 15 नंबर फराद लड़का खेल रहा है जो कि बहुत अच्छा मिडफील्ड को जो है ना वो सप्लाई करता है इस गेम को, खैबर पख्तूनख्वा टीम को।
थ्रो मिली। सुबह सिंध की टीम ने स्टार्ट में प्लेंटी के जरिए बढ़ती हासिल की और मिसअंडरस्टैंडिंग थी राइट आउट की पोजीशन पे। खुबैब ने बॉल को हासिल किया था केपीके के लिए, माइनस करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से आउट भी गए। और देखिए अगर 9 नंबर के अवैस उबैदुर रहमान, जी हाँ उबैदुर रहमान हमास गोलकीपर हैं, सिंध के बड़े टैलेंटेड बड़े यंग गोलकीपर हैं हमास। सिंध की तरफ से अटैक है राइट आउट की पोजीशन पे। जी हाँ सलमान उमर ने बॉल को हासिल किया, सिंध के लिए जाना चाहते हैं रेंजर्स एरिया में, माइनस किया और थोड़ी अभी थे फुरकान उमर। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा बॉल दिया था लेकिन असल में फॉरवर्ड जो है ना थोड़ा सा पीछे रह गया था। अगर वो अपनी पोजीशन पे होता तो हो सकता है ये रिप्ले देखो, ये बहुत अच्छी जो है ना वो मिस गोलकीपर ने भी जज किया, लेकिन अगर वो कैप्टन थोड़ा सा आगे चला जाता पहले तो वो गोल हो सकता था। खैबर पख्तूनख्वा के भी अच्छे लड़के हैं, 16 के प्लेयर है इसमें, बड़े अच्छे कंबाइंड है। पांच एक की बढ़तरी से पहला मैच जीत चुकी है पूल मैच में केपीके, लेकिन अब एक गोल के खसारे में फाइनल में ग्रुप ए की दोनों टीमें हैं और बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल मैच है जो आप देख रहे हैं जिनास फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद से। मैच कमिश्नर यासिर रहमान है, फोर्थ ऑफिशियल इस्माइल औरकज़ई और डायरेक्टर फुटबॉल कायदे गेम्स गौहर जमान पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस फुटबॉल के इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया और साथ असदुल्ला पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ऑफिसर हैं, जिन्होंने फुटबॉल के जो मैचेस हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज करवाए हैं। इंटर प्रोविंशियल गेम्स 2024 गोल्ड मेडल मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम की खूबसूरत फ्लड लाइट्स में आप देख रहे हैं और सिंध की टीम फुरकान उमर जो कि कैप्टन है उसकी गोल की बदौलत है एक गोल की बढ़तरी हासिल की हुई है। 1989 सैफ गेम्स जब याद आती है तो पाकिस्तान और 2004 की सैफ गेम्स फुटबॉल ही में इसी ग्राउंड पे तलाई तमगा हासिल किया था पाकिस्तान ने, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हुए थे और बहुत से इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे मुनक्किद किए जा चुके हैं। अटैक है अब अबैदुर रहमान ने बॉल को हासिल किया केपीके के लिए, लॉन्ग रनिंग करते हैं अबैदुर रहमान, खतरनाक खिलाड़ी हैं और किसी भी लम्हे कुछ भी करने की सलाहियत रखते हैं। ये बड़ा अच्छा स्पीडी लड़का है और इसको अगर बॉल मिल गया तो हो सकता है ये ले जाता है बॉल को। और केपीके की डिफेंस बड़ी ऑर्गेनाइज एक लाइन में जो है ना वो कर रही है, कॉम्बिनेशन है गोलकीपर के साथ, ये जुनेद है बड़ा अच्छा है, लेफ्ट से ये करता है। और इस ग्राउंड के साथ तो हमारी बड़ी यादें हैं और इसमें जो है ना बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस यहाँ पे हुए, इंटरनेशनल मैचेस हुए यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, जिना फुटबॉल स्टेडियम तारीख 7 स्टेडियम है पाकिस्तान का और 1971 में पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती का मुंह बोलता सबूत। बहुत खूबसूरत वेन्यूज़ हैं, लियाकत जिम्नेजियम का, स्विमिंग पूल हैं, साथ ही टेनिस कोर्ट हैं और साथ ही एथलेटिक्स का आप ट्रॉट एंड चेक आप देख सकते हैं। फुटबॉल के इस फाइनल तक पहुंचने के लिए दोनों टीम्स ने अपने मध्य मुकाबिल के सेमीफाइनलिस्ट टीम्स को जो शिकस्त दी है। बड़े अच्छे मैच हुए हैं सेमीफाइनल में, लॉन्ग रेंज पे थे, राहिल ने बॉल को हासिल किया केपीके के लिए, उबैदुर रहमान की तरफ बॉल जाती है लेकिन डिफेंडर वहां पे मौजूद थे। और गोलकीपर वक्त बाहर आए सिंध के। जब केपीके की जो टीम है मेरे ख्याल में वो अभी तक कोई मैच आ रही नहीं है, शुरू से लेके अभी तक कोई मैच इन्होंने हारा नहीं है अभी तक।
और बड़े कॉन्फिडेंस से वो खेल रही है। बड़े जी हाँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट ड्रॉ हुआ था मैच इनका। और कुछ बेंच प्लेयर्स उन्होंने खिलाए थे, लेकिन ये कि ओवरऑल इनकी पोजीशन अपने ग्रुप में और परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस कायद-ए-आज़म गेम्स में। KPK अब जब फुरकान उमर की तरफ बॉल आई, जुनेद अली ग्राउंड अपने एरिया से बाहर आए, हेड के जरिए क्लियर किया गोलकीपर KPK। KPK की तरफ से अटैक है और जी हाँ, बिहाइंड द टैकलिंग फाउल परफेक्ट विसल ब्लो की अहमद रऊफ ने और फ्री किक मिली है KPK की टीम को। फ्री किक KPK के लिए रंजिश एरिया के अंदर सलमान उमर ने ब्लॉक किया और गोल किक मिली है सिंध की टीम को। स्ट्रेटेजी सेट पीसेस के अंदर काम करना पड़ता है। जब तक आप इस किस्म की जब आपको किक्स मिलती हैं, इस पर बड़ा अबूर हासिल होना चाहिए, क्योंकि आपको 50% गोल के चांसेस होते हैं। जाफर क्या कहेंगे? हाँ, ये जो जिस फ्री किक पे लोगों ने बड़े बड़े काम किए होते हैं और वो परफेक्ट होता है कि वो इस एरिया में ढूंढते हैं कि मुझे किस टाइम जो है ना फ्री किक मिल जाता है कि मैं इसको जो है ना इससे फ़ायदा ले लेता हूँ, और उनके ऊपर बहुत काम किए होते हैं। और ये बड़ा ख़तरनाक होता है इस एरिया में जो फ्री किक होता है। थ्रो इन मिली KPK की टीम को। ये डग आउट KPK का सिंध, जी हाँ, सुबह सिंध का डग आउट था आपके सामने और अब सिंध के पास बॉल है। बड़े काम, बड़े कूल डिफेंडर हैं। ग्राउंड बॉल के ऊपर बड़ा अबूर हासिल है सिंध के खिलाड़ियों को। बड़े अच्छे बॉल को डिलीवर्स करते हैं, गैप बॉल डालते हैं और बीट करते हैं डिफेंस को। उबैदुर रहमान है, खतरनाक खिलाड़ी, बॉल को हासिल किया, बीट करना चाहते लेकिन बहुत उम्दा दिफाई खिलाड़ी सुबह सिंध के। इंटरप्रोविंशियल गेम्स कायद-ए-आज़म फुटबॉल का गोल्ड मेडल मैच। इससे पहले वुमेन का फाइनल मैच यहाँ खेला गया, जिसमें इस्लामाबाद की वुमेन्स प्लेयर ने गोल्ड मेडल हासिल किया सुबह सिंध की टीम को शिकस्त देकर। सुबह पंजाब की टीम ने कायद-ए-आज़म गेम्स के फुटबॉल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया गिलगित बल्तिस्तान की टीम को शिकस्त देकर। बड़ा अच्छा बॉल दिया KPK के फॉरवर्ड को और वो बहुत अच्छा अटैक हो सकता है। और अहमद रऊफ ने बड़ा अच्छा चेक किया, वो पेनल्टी लेने के चक्रों में था। जी बिल्कुल है, अहमद ने बड़ा क्लोज था और उसने बड़ा चेक किया कि वो उसने बॉल को टच किया। रिप्ले में देखो वो उसने बॉल को क्लियर किया और अहमद रऊफ ने बड़ा अच्छा चेक किया उसको। जी भाई, क्लीन क्लियरेंस